Hey guys, welcome back to Bansal Tutorials। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 8 की एक्सरसाइज चैप्टर 8.1 की थी। इस वीडियो में हम गणित मंजरी क्लास 9th की चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.2 करेंगे। So the first question is find the 10th and 26th term of the AP 3, 8, 13 and 18. So if in the question 1, AP is given as 3, 8, 13, 18 and so on, and we need to find term 10th and 26th term, 10th and 26th term। फाइन, तो वी नो दैट यहाँ पर a जो है वो 3 है एंड d विल बी 8 माइनस 3 विच इज 5। और अगर हम ए n का फॉर्मूला देखें विच इज गिवन एज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट गिव अस 3 प्लस n माइनस 1 इंटू d इज 5। फाइन, अब हमें निकालना है यहाँ पर a10, तो a10 विल बी 3 प्लस 9 इंटू 5 विच इज 45 plus 3 48, and another we have to find is a26, that will be a plus 25d। by putting the values of a and d we will get 128। so this is our final answer to question number 1। now let's see question number 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है विच टर्म ऑफ द एपी दिस इज माइनस 81, एंड देन ऑल्सो वी हैव टू चेक इफ 0 is a term of this AP or not, and if yes then we have to give answer। fine, so first just write the AP is given as 21, 18, 15 and so on, and the term which is given is, so AN is minus 81। fine, तो अगर हम an का फॉर्मूला देखें विच इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हेयर a इज 21 एंड d इज माइनस 3 बिकॉज 18 माइनस 21। फाइन, इसको आप मल्टीप्लाई नहीं है, ये सॉल्व करके देखा है हमने d क्या है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। फाइन, नाउ if you put the values here, minus 81 is equals to 21 plus n minus 1 into minus 3, we will get n is equals to 35। फाइन, जब आप इसे सॉल्व करेंगे सो 35th टर्म ऑफ दिस AP इज माइनस 81। अब हमें चेक करना है इफ 0 इज अ टर्म ऑफ दिस AP और नॉट, तो 0 इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी which is further equals to minus 21 is equals to n minus 1 into minus 3 which is equals to n is equals to 8। so yes, 0 is the term of this AP and 8th term of this AP is 0। I hope you clear hoga। this was for question number 2। now let's see what question number 3 is asking। so find the nth term of the AP this, and also we have to write the recursive formula for the AP। so if AP is 11, 8, 5, 2 and so on, तो हमें पता है यहाँ पर a 11 है and d will be 8 minus 11 which is minus 3। तो जो a n होगा वो होता है a plus n minus 1 into d। अगर यहाँ पर a और d की वैल्यूज रख दें we'll get 11 plus n minus 1 into minus 3 which is 11 minus 3n plus 3 which is further equals to 14 minus 3n। so this will be the an formula। and if we have to write the recursive formula, so recursive formula होता है लास्ट टर्म से कंपेयर करके। फाइन, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है इफ वी हैव टू फाइंड tn, तो प्रीवियस टर्म में से अगर हम माइनस कर दे 3 we'll get our next term। fine, so this was it for question number 3। now let's see question number 4। question number 4 में they were asking an AP consists of 50 terms, so हमें n given है in which third term is 12 and last term is 106। we have to find 29th term। so पहले जो information given है वो लिख लेते हैं। A50 हमें लास्ट टर्म गिवन है यहाँ पर 106, क्योंकि टोटल टर्म्स 50 हैं तो लास्ट टर्म 106 है, एंड देन वी आर गिवन दैट थर्ड टर्म इज 12, सो A3 इज 12। वी नीड टू फाइंड 29th term। we know that 29th term is a plus 28d,
For this we need to find A and D. Fine. तो यहाँ से अगर हम solve करें, by solving this we get A plus 49D is equals to 106, and by solving this we get A plus 2D is equals to 12. इन दोनों को अगर हम elimination से solve करेंगे, this will be 47D is equals to 94 and D is equals to 2. अगर हम D की वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे, we'll get A plus 2 into 2 is equals to 12, A plus 4 is equals to 12, A is equals to 8. I hope यहाँ तक क्लियर होगा. अब हमें A29 निकालना है, which is A plus 28D, which is further equals to 8 plus 28 into 2. So 8 plus 56, which gives us 64. So this is our final answer. Fine. Now let's move on to the next question, which is question number 5. Question number 5 is asking how many two-digit numbers are divisible by 3. What is the sum of all these two-digit numbers? So हमें पता है जो 3 के divisible two-digit number होते हैं वो start होते हैं 12 से, 12, 15, 18 and so on, और जो end होंगे वो 99 पे होंगे. तो इस AP से we get A as 12, D as 3 and AN as 99. सबसे पहले हमसे इन्होंने पूछा है how many two digit number. So we need to find N and then उनका sum पूछा है तो we need to find SN. Fine. यहाँ पर अगर हम AN का फॉर्मूला रखें that is A plus N minus 1 into D, we'll get 12 plus N minus 1 into D is 3 is equals to 99. So 3N minus 3 is equals to 87. 3N is equals to 90 and N is equals to 30. I hope यहाँ तक clear है. Now we need to find SN, which is S30, which is further equals to, हमें पता है SN का फॉर्मूला होता है N upon 2 2A plus N minus 1 into D. Fine. That will be 30 upon 2 into 2 into A was 12 plus 29 into D was 3. और जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे we'll get the answer as 1665. So this is the sum of all the two digit numbers that are divisible by 3. Now let's move on to the next question, which is question number 6. Question number 6 में they are asking that Harish started work at an annual salary of 5 lakh and received an increment of 20,000 each year. After how many years did his income reach 7 lakh? So हमें given है सबसे पहले उसकी income थी 5 लाख रुपीस. So that will be A. उसके बाद 20,000 का increment आ रहा है तो 20,000 हो जाएगा D. And then हमें निकालना है कि 7 लाख कौन से year में होगा तो that will be AN. So if we simply put all these value in the formula of AN, we will get how many years, after how many years his salary will be 7 lakh. Fine. So this gives us the answer. This is equals to that is further equals to N minus 1 is equals to 10 and N is equals to 11. So after 11 years his salary will be 7 lakh rupees. I hope your question clear है. Now let's move on the next question, which is question number 7. Question 7 में बोला है child arranges marbles in the rows so that the first row has 1 marble, the second has 2 and so on up to 25 rows. How many marbles does the child use in all? तो अगर पहली रो में फर्स्ट है 1 है, दूसरी में 2 है, तीसरी में 3 and then so on till 25 है, we need to find the sum of this. We know that Sn is equals to n upon 2 into 2a plus n minus 1 into d. Fine. Or n upon 2 into a plus an. We here have S25 is equals to 25 upon 2 into a is 1 and an is 25, which gives us 25 upon 2 multiply 26, which is equals to 25 multiply 13, which is further equals to 325. So this is our final answer.
अगर आपको इस पूरी एक्सरसाइज में कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट्स में पूछ सकते हैं, वरना आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस के लिए कंसल्ट करना हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे पिंग कर सकते हैं, जिसका नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है। दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।